Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Let me have a quick tech check. Okay, so I think everything seems to be fine, right? Hmm. Yes. Sorry, fellas, there are some particular technical issue there was. So the session got delayed for some minutes. Okay. Okay, that's completely fine, Rish Pandab. It's completely fine. है ना? Yes, so let's have some discussion. Right, what we are supposed to have today, आज की न्यूज़ में क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी अगर हम बात करें, जो न्यूज़ है कल से आज तक के लिए. राइट, सो न्यूज़ में बहुत कुछ था. सोशल मीडिया वाज वेरी मच देयर. फॉर एग्जांपल, अभी अभी व्हाट्सएप को पिटाई मिली है ओवर द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी. राइट, व्हाट इज दिस? हेलो दक्ष. Okay, so I'm not sure why the pen is not working. Like few minutes back it was working. Right now it's not working. So let's see. Let's discuss. So social media was full of some particular basic things. One of them was funny part, that was Pakistan's cricket team और उनके जो भी वो हैं डिसीजंस हैं, उनके लिए काफी लोगों ने चर्चाएं की कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, ये उनको ही आइडिया नहीं है. Second, India US trade deal was in news. There are huge criticism. uh, if I'll discuss this, we are going to have discussion on this. So there is a huge criticism on the stand of government of India from the very supporters of the Bharatiya Janata parties as well. Opposition to कर ही रहा है, and people and experts are also not very much happy with the trade deal that happened. Farmers are not happy क्योंकि उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं this is going to harm the what we can say the farmers. Okay, and agricultural dairy sector को खोलना is not something जो कि हमें करना चाहिए था. Then we had this particular issue, how India is going to buy $500 billion of it, goods from the America. अगर हम एनर्जी और ऑयल पेट्रोलियम इन सबको जोड़ ले तो पॉसिबल है, बिकॉज इंडिया का ओवरऑल इम्पोर्ट ही अप्रोक्सीमेट $800 billion का. एंड हमारा बजट वो समथिंग जो कि 49 लाख करोड़ के आसपास का, 50 लाख करोड़ के आसपास का था. दिस इज गोइंग टू बी बेटर देन, मतलब मोर देन दैट. So there are a lot of question in this particular deal, but still we don't have accurate, what we can say, opening, accurate seeing क्या क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं. So let's hope for the best कि क्या निकल के आता है. We'll discuss. Then after the this particular thing, the Manipur government is being restored, almost restored. Okay, yes, almost restored in the sense we are going to have Khemchand, right, as the elected Khemchand Singh, as the elected Manipur BJP legislative leader. That means he's going to be the next chief minister of Manipur. The opposition is clearly not happy with this particular, what we can say, decision, because they wanted to have a re-election. They wanted to have some new government to be elected, but सेंट्रल ने इस तरीके का वो नहीं किया. सो मणिपुर का नया गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ है. दैट इज द सेकंड बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे.
Third was the suspension of MPs from the parliament. Right? Yes, eight MPs from the opposition. Right? Eight MPs from the opposition. They were what we can say. Suspended over the certain particular issues. Yes, leader of opposition Rahul Gandhi wanted to mention some particular quote from the former General M. Narwane uh, from his memoir, but the government and the speaker, the ruling party and speaker did not allow him, and after that there was a huge crisis, there was a huge set, what we can say, problem. Then there was a voice vote जो हुआ और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया. So there was Article 105 जो parliamentary privilege की बात करता है, and speakers की power और natural justice in the legislative disciplines, इन सारी चीजों के बारे में discussion जो है वो शुरू हुआ. The next big news was of the WhatsApp versus Supreme Court of India over the data privacy and competition laws. Yes, Supreme Court strongly criticized the WhatsApp and Meta for a commercial exploitation of the personal data of the Indian customers, calling it a proper, decent way of committing theft. उन्होंने इसे decent way of committing theft बताया. That was something जो बहुत एक huge statement होता है. सो ये काफी पुराना केस है, एनसीएलटी के अंडर, एनसीएलटी के अंडर आया था, जिसमें करीब 213 करोड़ का फाइन लगाया गया था. राइट. इसी ने वो कंसेंट टर्म को, जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसको भी क्या किया, क्वेश्चन किया कि मीनिंगफुल ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए होता है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच गिव्स यू कंसर्न टू सेल द डेटा. राइट. फिर वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 डीपीडीपी जो है उसके अंडर भी उनको क्रिटिसाइज किया गया, और फिर बहुत सारी चीजें. तो ओवरऑल फैशन में ये कुछ बड़ी न्यूज नहीं है पिछले एक दिन के. एंड द बिगेस्ट न्यूज वाज ऑफ यूएस डील, इंडिया यूएस डील. ठीक. So the timeline was different. When yesterday morning we were discussing about this particular deal, at that time we didn't have much of the details क्योंकि ये सारा कुछ रात में चल रहा था. Right. Yes, 10:30 around these all things were started. Whether that is the phone call from the between the Trump and Modi ji, and the announcement is something like this. So first of all, it was announced that there is a phone call going on between the leaders. Right, the leaders included Modi ji and the Donald Trump. है ना? The phone call is going on, and phone call was simply associated with this particular India-US trade deal. Right. My pen is not working, so I might not be able to write down something. I'm not sure why. But let's have a discussion. Okay, so the thing started from one of the tweet from the US side, जहाँ से उन्होंने बताया कि there is a phone call going on. We are going to have a trade deal finalized very soon. Then Donald Trump announced this particular deal, that we had completed our deal, discussion on this particular deal, and these are the conditions. After that particular tweet, this was like 2 a.m. in the morning, when these kind of the first tweet was from the US, and then उसके बाद ये सारी चीजें जो है इंडियन लीडर्स की तरफ से भी बाहर आना शुरू. The morning we were just aware about the trade deal, $500 billion export, the stopping of the buying Russian oil from the Indian side, and some other one. For now, the entire particular highlights is there. Let's have this particular thing कि क्या है. Now, की highlights के लिए जो मैंने notes बनाए थे उसमें कुछ specific चीजें बता देता हूँ. सबसे पहली चीज, यूएस साइड से टैरिफ रिडक्शन हुआ है टू द 18%. कितना हुआ है? 18%. I'm really sorry guys, I'm not sure why this is happening, but this is happening. Okay. So 18% का reduction हुआ है, which was earlier was 50%. Yes, 50% on the reciprocal tariff. Sorry, 25% reciprocal tariff plus 25% penalty tariff to buy for the purchase of Russian oils. So overall, India was facing a 50% tariff, and it was reduced to 18%. First thing.
Right. Second, the biggest setback from the experts is the stopping the purchase of Russian crude oil. Yes, Russia as a crude oil लेना इंडिया के लिए one of the beneficiary policy भी रही है, and apart from this, Russia is historically a great and one of the finest ally that we are having, right? But अगर हम रशिया से cheap crude oil खरीदना बंद कर देते हैं, then we have to purchase that oil from either US and then Venezuela, which is going to be costly, which is going to be like दूर है भाई अमेरिका और वेनेजुएला, तो पैसा तो लगेगा. तो ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव एस्पेक्ट है. देयर आर एक्सपर्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज सेइंग इंडिया वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन द in terms of foreign affairs, but now it starts feeling like the India's foreign policy is being somehow influenced and made by the US counterpart. ये थोड़ा सा हाँ, दक्ष करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं. सो ये थोड़ा सा नेगेटिव भी था, बिकॉज इट शुड बी आवर ऑटोनॉमी टू डिसाइड हम कहाँ से ऑयल खरीदेंगे, हम कहाँ ऑयल बेचेंगे रिफाइंड करके, राइट. एंड देयर इज नॉट समथिंग जो कि बाहर से आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट रहा. सेकेंड थिंग, परचेसिंग ओवर $500 billion इन अमेरिकन, है ना, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड फार्मा प्रोडक्ट ओवर द टाइम. सो अगर हम फार्मा प्रोडक्ट, हम अमेरिकन एनर्जीज एंड टेक्नोलॉजीज $500 billion का इंपोर्ट करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी ह्यूज. फॉर नाउ, total the trade between India and America is close to $140 billion, in which 80 to $90 billion is being exported from India, and close to 40 50 billion is imported from America. In this particular trade, the balance, the positive side is ours. So if we are buying $500 billion, then it's going to be a negative side. From the very beginning of his second term, is mentioning this that we are supposed to balance the trade in favor of us with the countries like India. तो वो बहुत पहले से इस चीज पे काम करना चाहता था, right? Third thing was reducing the US tariff goods on like tariff on US goods to zero. Yes, हमने अमेरिकन जो goods हैं उनको जीरो टैरिफ मिला दिया. Hmm? Now, now the problem is, अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ जीरो है, तो अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट में आना, लेकिन अमेरिकन गुड्स का इंडियन मार्केट में आना काफी इजी हो जाएगा. तो ये वो पर्टिकुलर चीज है जिसपे अभी भी डिबेट है ना. बट यूएस प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के अनुसार दिस इज समथिंग जो जीरो हो चुका है. नाउ अंडरस्टैंड, we are going to give 18% tariff, but still there are particular some sectors like steel, aluminum, some others which are going to be more than 25%. है ना. मनी कंट्रोल में कल मैंने काफी अच्छा आर्टिकल पढ़ा था. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर मनी कंट्रोल आर्टिकल कि ये जो ट्रेड डील है उसका एग्जैक्ट पर्टिकुलर सेटअप कैसे होगा. सो देयर आर स्टिल सेक्टर्स, स्टील वाला हो, एल्यूमिनियम वाला हो, दूसरी चीज हो, जिसमें टैरिफ आर गोइंग टू बी मोर देन 25%. सम ऑफ देम इवन आर हैविंग 40% tariff, right? So if we are like average, we are giving 18% tariff and we are getting the products from the US side from the 0% for the 0% tariff, that is going to be a problem for our economic balance, right? Now, these were the major aspect. Now, next particular issue was agriculture product. Yes, I'm not sure how your particular memory is, but when this deal was not happening, they were in between the talk. There was this particular one statement from our Prime Minister that it's going to cost personally if I'm not making a trade deal with America. But I'm not going to let down our agriculture, like the pharma sectors, fishery sectors, people at any cost. So, if Americans are having access to India's agriculture, pharma, and dairy sector, it's going to be a very big problem for the local farmers. Why? Because it's simply a difference between the dependency. मतलब America is having huge farming setup. The individual farmer can have
like hundreds of thousands of acre land. They use heavy machinery, they use efficiency in the agriculture production, and they come out with the profit setup. So if they are selling in India, right, it's going to be cheaper, 0% tariff obviously, and it's going to harm the Indian farmer sector. तो ये अगर इस तरीके का है, like the government says it's included the agriculture and farmer sector, but the Americans have already mentioned that the agriculture sector, even the agricultural secretary of America has welcomed this deal, and they mentioned that is going to have this is going to benefit the rural agri and pharma sector of America, and cash flow is going to be there. तो अमेरिका की तरफ से ये आया है, the Indian government is still saying, we are not like explicitly exclusively open the agriculture and pharma sector. So problem है वहाँ पे. Said this on the Republic Day, something like this. Okay, हाँ, हो सकता है. I have seen his one of the statement. तो यहाँ पे है. तो these are the debate जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो है. Now, what are going to be economic impact out of this? So, sector benefiting, जो sector benefit होंगे उसमें labor intensive industries like textile, apparel, leather, gems and jewelry, they are expected to see a significant boost because tariff कम हुए हैं, and जो हमारी competitors हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, उनके टैरिफ अभी भी हमसे 1-2% ज्यादा है. तो डेफिनेटली इंडिया की तरफ थोड़ा सा बेनिफिट जाना है. दूसरा, जो जिस तरीके से मार्केट एक्ट हुआ है लास्ट डे, सो द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स आर काइंड ऑफ वेलकमिंग दिस डील. 2000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया हुआ है, एंड आई गेस निफ्टी रोज अप विद 50 पॉइंट्स, राइट. तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को वेलकम कर रहा है, बट राइट, the strategic shift that we are seeing in our foreign and economic policy, this is something जो कि लोगों के लिए criticism point है ना. uh, the one of the statement I got it was this deal follows up closely after India's mother of all deals, a free trade agreement with the European Union, positioning India as a key manufacturing alternative to China. Now, India is pursuing a deal with the opposite nature. That is थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना. अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे क्लैरिटी चाहिए. It's unfortunate that neither American side is providing the very proper terms and condition, neither Indian side is providing. So official documentation थोड़ा सा अभी भी वो है. The political agreement is reached. Both nations are still preparing the specifics. A joint statement with final detail is expected very shortly. Conflicting claim जो है ना वो थोड़ा सा problem है. India has not officially confronted Trump's claim regarding the total halt on the Russian oil and zero tariff commitment on all the US goods. ये थोड़ा सा problem करेगा. तो certainty is still not there, right? Because the terms look very extreme. $500 billion import, no Russian oil, buy from us, फार्मा एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन. और ये आज का नहीं है, मतलब बीजेपी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स. आई मीन आई एम श्योर 1984 का टाइम था when after globalization the government wanted to open the agriculture and pharma sector for the global players, but Atal ji and Murli Manohar Joshi ji जो थे, they came to road and they opposed it like anything कि वो सेक्टर वो खोलने ही नहीं दिया उन्होंने. वो आई एम नॉट श्योर कि जो जिस तरीके के एक्सपर्ट्स बात करेंगे इफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ओपन, I'm pretty much sure that this is not something that we should do, and I like the government is not going to do this. तो ये डील that looks like this is going to have a proper positive impact, but मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे कोई बहुत ज्यादा फाइन तरीके से बात करनी चाहिए. अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है एंड बहुत सारा क्लैरिटी आना बाकी है. सो पीपल आर सेइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग, एंड एक प्रॉब्लम ये भी है, द पीपल हैव लॉस्ट देयर पेशेंस. एंगेजमेंट स्पेसिफिक दुनिया में
People have started taking everything fastest rather than everything correct. ये ज्यादा डीप नहीं हो गया ज्ञान है ना? मैं बहुत ज्यादा डीप ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, एवरीथिंग एवरीबडी वांट टू प्रेजेंट थिंग फास्टेस्ट रादर देन करेक्ट. ओके, सो हमने कल भी यही बात, लाइक कल बहुत सिंपल तरीके से बात की. देयर इज अ ट्रेड डील दैट वाज क्रैक्ड. प्रॉपर डिटेल नहीं है. आज हमारे पास जितनी डिटेल थी दैट वी डिस्कस्ड, राइट. एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, दूसरे लोगों का क्या कहना है, आई टोल्ड एवरीथिंग. नाउ, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, let's move to the national news, that is Hemchand Singh elected Manipur's BJP legislature party leader, said to be the next CM. हाँ, सबसे पहली चीज, लाइक, if I see the Manipur, that is again my personal opinion, nothing, it's nothing to do with other things. The Manipur situation was in such a mess that if, right, there was a president rule, then clearly they were supposed to have a proper election back. Okay, yes. ये एक पर्टिकुलर चीज थी जो मैं चाहता था कि इलेक्शन हो, जिससे पीपल शुड गेट टू नो, get a chance to elect their government again, because the way Manipur burned, way Manipur happened, right, from last 3 years, this is not something that is supposed to happen. So yes, कहीं ना कहीं मैं इस चीज से वो नहीं हूँ, but the restoration of elected government under Article 174, that is something जो हो रहा है. कांग्रेस जो है उन्होंने चैलेंज किया है इस गवर्नर्स के रूल को, फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल एंड डिलेइंग असेंबली सेशंस एंड देन री-इलेक्टिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो 2025 February 13, दैट वाज द डेट व्हेन मणिपुर वेंट इनटू अ प्रेसिडेंट रूल. उसके पहले 2 साल वो चलता रहा, परेशान रहा. देन मैंने बताया था कल कि देयर वाज अ मीटिंग for the leadership. So finally, this meeting happened, right? And BJP elected the Y. Hemchand Singh, that is, sorry, Yamnam Hemchand Singh, the 62-year-old legislature, to be the next leader, party leader in the Manipur Assembly. And he is very much said to be the CM of Manipur. And कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर मूव को चैलेंज किया है अंडर द आर्टिकल 174 174 1 जो है वो कहता है असेंबली मस्ट बी मीट विद इन 6 मंथ. सो प्रेसिडेंट रूल हो या किसी भी कंडीशन हो, असेंबली जो है वो 6 महीने में एक बार मिलनी चाहिए, बट वो नहीं मिली. और उसके बाद ये हुआ, तो दे मूव टू हाई कोर्ट फॉर द क्लेरिफिकेशन एंड फर्स्ट डे कि ये नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 356 वाज देयर अंडर व्हिच दिस प्रेसिडेंट रूल वाज इम्प्लीमेंटेड. एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उस पे थोड़ा सा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है. Then Rahul's speech, Rahul's speech triggered the face of 8 MP suspended. भाई साहब, पार्लियामेंट में कल बहुत कुछ हुआ है. मतलब yesterday I told you about that particular speech of leader of opposition Rahul Gandhi, in which he wanted to quote something from the memoir of the former general M.M. Narwane. But the ruling government decided कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे. Okay. कल जब सारी चीजें बैक एंड डिटेल, ये सारी चीजें मैंने रिसर्च की, देन आई गॉट टू नो कि द बुक which he was quoting, the magazine which was analyzing that book, and the magazine he was quoting, the book was never published, because from last 2 years the book is under the defense committee's supervision, and they are still researching whether the facts, whether the details in the book is supposed to be like published or not. So when defense minister said the book is not published, all right, get the book, then we will talk. So it was defense ministry who hold it, right? Then the problem was, he was quoting a magazine about the Doklam issue when there was certain problems between India and China. There is still a problem between India and China, but the ruling government decided not to let him do that. एंड उसके लाइक इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद राहुल गांधी जी के सपोर्ट में बहुत सारे एमपीज आए. एंड इवन द राज्यसभा वाज टॉकिंग अबाउट दिस इशू, वेयर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज नॉट अलाउड टू टॉक, राइट.
तो बहुत सारी चीजें होने के बाद अल्टीमेटली देयर वर 8 एमपीज हु वर सस्पेंडेड। लीडर ऑफ अपोजिशन जब बाहर आए पार्लियामेंट के, तब भी उन्होंने कुछ बातें बोली। फॉर एग्जांपल ही टॉक्ड अबाउट द एप्सीन फाइल, थी Adani's case in America, and he said the deal that happened today, it was a compromise because of these reasons. तो काफी ट्रिगरिंग क्या कहना चाहिए, फॉर नाउ द पार्लियामेंट इज गोइंग वेरी ट्रिगरिंग, इट्स गोइंग, इट्स फन, right? And I believe, I saw that particular speech in the parliament. I believe that he should be allowed to speak about it. Then the government should have defended it very properly. कहीं ना कहीं this particular what we can say, debate and not letting speak, this is something which is what we can say, uh, थोड़ा सा मोरल डाउन करता है मिलिट्री का, आर्मी का। तो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट? दैट वाज व्हाट हैपेंड। फिर ये पॉलिटिकल स्टेट न्यूज़ जो है वो कंटिन्यू थी। हाँ, द ग्रीन टर्टल है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए उड़ीसा जो है वो स्टेप लेने वाला है। सो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, दे आर वेरी क्यूट। वन ऑफ माय फ्रेंड वंस like did a video call, he was there when this particular hatchery and movement was happening. The turtles are really very good. कर्नाटका सीएम टेबल्स अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द न्यू रूरल जॉब एक्ट। यस, कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन लेके आए हैं अगेंस्ट द वीबी जी राम जी। उनका ये मानना है कि दिस पर्टिकुलर बिल, दैट इज विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी कानून एक्ट, जो है वो कहीं ना कहीं रूरल एम्प्लॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। So that is the reason they put a new resolution on the table. Let's hope for the best कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या निकल के आता है। देन लेपर्ड मिला भाई बेंगलुरु के उसमें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए पकड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस लीडर्स का कहना है मणिपुर हाउस मस्ट बी डिसॉल्व एंड देयर शुड बी अ री इलेक्शन, बट nobody is listening, so that is why they moved to high court। मैंने ये बात कर ली अपन ने। देन राहुल गांधी एसपीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यस, इंडिया यूएस ट्रेड डील को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, वी डिस्कस दिस। एंड मैंने मतलब जो मेरी अपनी समझ है, जितना मैंने फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन चीजों मतलब पॉलिटिक्स देखी है, दैट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट इज इसी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप मेटा पर्सनल डेटा, राइट? So there was a hearing on 2021 data sharing policy of the WhatsApp, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी। The bench was led by Justice Surikant and there is several critical points. So वो points जो थे वो मैं लिख के लाया हूँ। So let's discuss this. It's a take it or leave it policy. So the court questioned the fairness of the forcing user to accept the data sharing terms as a condition of a continuation of service, describing it as a mockery to constitutional value. So कोर्ट का सीधा कहना था कि भाई अगर आप यूजर को फोर्स कर रहे हो to accept the data sharing term as a condition of a service, तो ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की मॉकरी हो गई। Second, this is would you inform about the consent to the users, right? Yes, they mentioned it, yes, we have written the policy, well, no, did you inform that this is going to happen separately? उन्होंने मना किया। So a major concern was whether ordinary citizens such as street vendor, rural resident could understand the cleverly crafted legal language of a privacy policy to give a genuine consent। ये कहना है कि आप एक बहुत ही अच्छे से पॉलिश लीगल लैंग्वेज लिखते हैं और उसको कितनी समझ होती है रूरल वेंडर को या लोकल वेंडर्स को, ये आप नहीं समझते। डेटा शेयरिंग इज अ थेफ्ट। Yes, the Chief Justice compared the commercial exploitation of the personal data without clear opt-out mechanism is a decent way of committing theft. The commercial exploitation जो है वो privacy violate नहीं कर सकता, that was their said. The bench also questioned how the metadata and other users behavior are commercially exploited for the targeted advertising. So ये चीज होती है, like कुछ मत करो, don't use any internet, है ना, just switch off your internet and then call your three four friend and talk to them about
how desperately you want to buy a shoe, right? Call them, I want to buy a sport shoes, इसका लूं, किस ब्रांड का लूं या किस ब्रांड का लूं, तू सजेस्ट कर दे ये वो. Even if you are not using internet, after like half an hour, you'll start getting the advertisement. So कहीं ना कहीं वो जो commercial exploitation है for the algorithm, for the data sharing, that is something जो Supreme Court ने इसके against बोला. The court also noted that the WhatsApp functions as a near monopoly in India. Users lack a meaningful alternative, making consent under the current policy services compulsion. Right. The C also indicated they might dismiss Meta's appeal unless the company provides an undertaking that it will not share the user's data for the commercial gain. Last one. The court warned Meta to exit India if it cannot adhere to the country's constitutional standard regarding the right to privacy. So उन्होंने स्ट्रिक्टली मतलब मेटा को बहुत स्ट्रांगली क्या किया, स्लैम डाउन किया कि भाई सुन, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. सो इफ यू कैन फॉलो इट देन फाइन, नहीं तो तुम जा सकते हो. वी आर इंडियंस, वी कैन हैव लाइक, वी कैन मेक जुगाड्स बाय एनी मींस. तो ये कुछ चीजें हैं जो रही हैं. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है. पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन भी जरूरी है. सो ये चीज है. The court is very much strict against the the commercial use of data. तो ये एक अच्छा वो था. मेक श्योर कि ये अपने उसमें नोट्स पे प्रॉपरली वो करें. NSA provision allows Wangchuk to transfer to Rajasthan State Center. सोनम वांगचुक के केस में हियरिंग हो रही है. सेंट्रल ने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है कोर्ट में दिया हुआ है कि दी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उनकी जो प्रोविजंस है इसके, दे अलाउड सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द सोनम वांगचुक टू एनी प्लेस इंक्लूडिंग राजस्थान, एंड इट्स कोटेड एज अ फेयर ट्रीटमेंट. तो आपको पता ही है एनएसए के अंडर उनको लास्ट ईयर, नॉट श्योर, आई गेस सितंबर में, सितंबर एंडिंग में तो उनको अरेस्ट किया गया था. सो द केस इज स्टिल गोइंग ऑन. Okay, this was entirely political. US deals a big decision that will benefit India, PM tells to NDA MPs, while opposition are saying other way, right? And this particular article, so यहाँ पे है, I'm sure you are watching, right? Trade deal unanswered question, I mean, ये जरूर पढ़ना, है ना? इसको properly तुम क्या करोगे? पढ़ोगे. Oh, it started. Thank God. Hmm. हमने कुछ unanswered question जो है आपको बताए भी, right? And you can follow that. Okay, and no word on the India stopping oil purchases Kremlin. अभी तक रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल तो वो नहीं आया, बट उनका ये कहना है कि अभी तक इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट या कोई भी पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से मेमो या कुछ भी नहीं आया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, राइट? So opposition MPs question centers on India US trade deal. This is something जो कि कहीं ना कहीं डिस्कशन होना चाहिए. Yes. So there are two particular things. एक तो India and EU, right? FTA. Then there is another particular big deal that happened recently, that is India USA. So India has done two big deals, trade deals with two very powerful economies, right? So when this is there, this should be discussed in the parliament as well. सो जो कांग्रेस एमपी है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी ये बात रखी कि वी शुड हैव अ फेयर डिस्कशन ऑन द इंडिया यूएसए डील एंड इंडिया एफटीए डील. But I think the speaker and the chairman, they are still to be accepted. And Mamta Banerjee and SIR and Election Commission. This is getting dirty, right? Opposition impeachment के लिए वो कह रही हैं, right? And she might likely to be attend the court against the SIR process, right? तो चल रहा है मित्रों, पॉलिटिक्स. ओके. Then social justice is still in like to be achieved in India. 85%, 84% waste pickers from the are from the SC, ST and OBC group. Yes. So social justice is saying something जिसमें हम सोसाइटी का हर एक पार्ट equally treat करें, equal opportunities दें. तो in India there are like
84% वे स्पीकर्स जो कि अपॉइंटेड हैं उनमें से टोटल जो अपॉइंटेड है उसमें से 84% आर स्टिल फ्रॉम द socially lower caste, which is not an aspect of social justice. Okay. आज के न्यूज़पेपर में मेजरली यही पर्टिकुलर कुछ चीजें थी एंड इंडिया लाइक यूएस ईरान वाज देयर, वो तो खैर कंटिन्यू चलने वाला मोटिव है। मेक श्योर एडिटोरियल जरूर पढ़ें, है ना, ये वाला भी पढ़ना, ये बहुत जरूरी चीज है। एंड देन व्हाई बीजेपी स्ट्रगल्स इन तमिलनाडु, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, राइट, मेक श्योर इसको जरूर पढ़ना। एंड देन 16 फाइनेंस कमीशन वाली न्यूज़ भी इतनी जरूरी नहीं थी, बट इट वाज देयर। सो बिजनेस में ट्रेड डील ही है जहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब जो न्यूज़ में है, राइट। जो भारत कंटेनर शिपिंग लाइन है उनका जल्दी ही प्रॉपर प्लान जो है वो एंड अप हो जाएगा। वेनेजुएला ऑयल विल बी डिफिकल्ट टू प्रोसेस इंडियन रिफाइनरीज, यस। इवन अमेरिका अलाउ करता है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें, तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि फर्स्ट थिंग जो रिफाइनिंग है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगी, पहले तो कॉस्टली हो जाएगी। दूसरा वेनेजुएला ऑयल थोड़ा सा, व्हाट वी कैन से, जिस तरीके की वेनेजुएलन ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको प्रोसेस करना, रिफाइन करना, इट्स डिफिकल्ट, दैट यू कैन से। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम आगे वो करें। Trump pushes to channel crude oil into India, won't defy market forces. Yeah, आदमी, Russia sounds alarm to as a new START treaty set to expire. Yes, जो START treaty है, which is actually kind of nuclear treaty between the American and Russian, है ना, uh, which has some particular conditions. We are not, hello Bhavik. The US will not provide anything. US will provide that technology after taking some money from India. Okay, so जो स्टार्ट ट्रीटी है वो सेट टू एक्सपायर वाली कंडीशन में है। एंड इफ दिस हैपन, अमेरिकन और रशियंस के बीच में फिर से वो न्यूक्लियर वेपन की जो रेस है वो शुरू हो सकती है। स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट इज क्रिटिकल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में फिर से वो शांति का खतरा पैदा हो सकता है, राइट। यूएस शूट डाउन ईरानियन ड्रोन दैट अप्रोचेस एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा यूएस का कहना है, सेंट्रल कमांड का। ठीक है। पाकिस्तान अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अर्गिंग द एग्रेसिव रिस्पांस टू द टेररिज्म, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कारण हो उसके बाद। सो बीएलए's coordinated attack in Balochistan deepens the Pakistan political crisis। ये अपन कल डिस्कस कर चुके थे कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। देन स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था। And then we are into this. Okay, ready for the question answer today? I think yes. Right. So let's start with the first one. Who was elected as the BJP legislature party leader in Manipur for paving the way to formation of a new government? So किसे मणिपुर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर जो है वो इलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस आर एन बीरेन सिंह, यमनम खेमचंद सिंह, तरुण चुग या अजय भल्ला। बताएं। दक्ष का कहना है बी, ऋषपर्ण का कहना है बी। यस, वेरी करेक्ट। अपन ने बात की एन बीरेन सिंह, यू कैन से ही इज अ फॉर्मर सीएम ना। इसके पहले प्रेसिडेंट रूल लगने के पहले ही वाज द चीफ मिनिस्टर, then he resigned. For now, the Yamnam Khemchand Singh is going to be the next party leader and CM of Manipur.
मणिपुर वॉज प्लेस्ड अंडर द प्रेसिडेंट रूल ऑन वेस्ट डेट। प्रेसिडेंट रूल में मणिपुर किस डेट में आया? जनवरी 29 2025, फेब 9 2025, फेब 13 2025, मार्च 1 2025। आई नो सर, आप डेट्स भी पूछ रहे हो, उसमें मंथ और डेट भी है, बट इसको मैंने 5-6 बार बताया हुआ है, तो आई बिलीव तुम्हें भी याद हो गया होगा। बताओ। द करेक्ट आंसर इज February 13 2025। कब आया ये? February 13, नॉट इन मार्च ऋषिका बच्चे, Feb 13 2025। वेरी गुड, वेरी गुड। दक्ष, नो नो नो, Feb 13, ठीक है। Okay, the next question is, under which article of Constitution did the Manipur Congress President seeks a dissolution of the State Assembly? किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मणिपुर के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, दे वांट टू असेंबली टू बी डिसोल्यूट एंड देन उसके बाद नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो? ऑप्शंस आर आर्टिकल 356, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 टू आर्टिकल 368। बताओ मित्रों। तुम्हें बी और सी में ही डाउट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 356 और 368 तो तुम्हें पता है कि these are the entirely different concepts। ओके, पढ़ना कहना है सी, दक्ष का कहना है सी। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 174 टू अपन ने इस पे डिस्कशन भी किया था। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, which 2023 law currently addresses the only privacy but not the value of personal data? राइट, इनमें से कौन सा लॉ जो है वो प्रिवेसी को एड्रेस करता है बट नॉट द वैल्यू ऑफ पर्सनल डेटा? ऑप्शंस आर आईटी एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, कंपटीशन एक्ट 2002, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट। ओके, दक्ष सेड बी, ऋषपर्णा सेड बी, वेरी करेक्ट। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अभी अपन ने बात की ना वो व्हाट्सएप मेटा वाले केस में, ठीक है। यस, वेरी गुड भाविक। चले, let's move to the next question. The Supreme Court imposes a penalty of 213.14 crores on the WhatsApp and Meta under which authority? किस अथॉरिटी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने 213.14 करोड़ का फाइन जो है वो व्हाट्सएप और मेटा को लगाया? ऑप्शन आर सेबी, क्राई, आरबीआई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ मित्रों। वेरी करेक्ट ऋषवर्णा, दैट इज सी, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। नहीं, ट्राई नहीं, सीबी नहीं, आरबीआई नहीं, यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आएगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार अपने नोट्स में कल वो करके रखना कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी और समथिंग एल्स, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द द सस्पेंडेड MPs were protesting over Rahul Gandhi being denied permission to speak on। जो पार्लियामेंट में एमपी सस्पेंडेड हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी की परमिशन, मतलब राहुल गांधी being denied permission to speak on which particular issue? China border issue, farm law, unpublished memoir of the जनरल मनोज नरवाने, और इलेक्शन रिफॉर्म। बताओ। ये तो बहुत इजी है भाई। The unpublished memoir of General Manoj Narwane, am I correct? Yes, former General Manoj Narwane. Very good, guys. Next, which act empowers government to regulate the place of detention of a person detained under national security reasons? So, इनमें से कौन सा एक्ट है जो empower करता है
कि एक इंडिविजुअल की प्लेस ऑफ डिटेंशन चेंज की जाए अंडर द नेशनल सिक्योरिटी रीजन. ऑप्शंस आर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज आप्सपा, है ना. ध्यान देना, इसको आप्सपा कहते हैं. इसको यूएपीए कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. इसको एनएसए कहते हैं. सीपीसी, दैट इज क्रिमिनल, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, और इसे सीआरपीसी कहते हैं. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. डिटेंशन जो हुआ है हमारे सोनम वांगचुक का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये तो बोला कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उनके प्रोविजन हमें अलाउ करते हैं कि हम डिटेंशन की प्लेस जो है वो चेंज करें, डिटेंशन कहीं और रखें. याद है? हम्म. चल. Climate activist Sonam Wangchuk was transferred from Ladakh to which state under NSA? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उन्हें किस जगह पे ट्रांसफर किया गया लद्दाख से? ऑप्शन सर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. बताओ. कम ऑन. जोधपुर जेल, राजस्थान. वेरी गुड गाइस. वेरी गुड ऋषपर्णा, दक्ष. चले. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which wildlife species conservation raised concern due to the proposed turtle trails in the union budget? किस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के कंजर्वेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आफ्टर द प्रपोजल ऑफ टोटल ट्रेल्स इन द यूनियन बजट? ऑप्शंस आर हवस्किल हवबिल टर्टल, ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, लेदरबैक टर्टल. ऑलिव रेडली टर्टल, नॉट ग्रीन टर्टल. हाँ, वो ग्रीन दिखते हैं बट ऑलिव ग्रीन. ओके. आई कैन अंडरस्टैंड दक्ष, मैं और तुम लड़के हैं, कलर ब्लाइंडनेस हमारी बचपन की वो है. वी आर स्टिल टू फिगर आउट कि मेजेंटा पिंक, बेबी पिंक, हॉट पिंक में क्या डिफरेंस है. बट दैट इज ओनली वैरायटली ग्रीन. ठीक है. नॉट द ग्रीन टर्टल. चलो, उड़ीसा वाले उसमें ना. The last one is Karnataka Assembly passed a resolution opposing which central legislation related to rural employment. Okay. कर्नाटका असेंबली ने किस सेंट्रल लेजिस्लेशन के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शंस आर पीएम गरीब कल्याण योजना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वेरी गुड ऋषपर्णा, वेरी गुड दक्ष. ओके भावेक. द करेक्ट आंसर इज बी, बीवीजी राम. ठीक है, दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मनरेगा. तो फिर ये रुक गया क्या? ठीक है. सो दैट वाज द क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. राइट. आज के न्यूज़पेपर में जो मेजर हाइलाइट्स नहीं है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके. Everything was written. I mean, look at this. See, that happens, huh? It's completely fine. So these were the major news for today, जो हमने डिस्कशन किया, है ना, which included like one of the finest, आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो इंडिया यूएस ट्रेड डील थी. इसका डिस्कशन जरूरी था, हमने प्रॉपर किया. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. मजे करें, एंड लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. सी यू गाइस. गुड डे.